Yeah, I think that should be right. Let me just see once. 33, Aman. Sir, 1 minute, sir. I'm not able to figure out the figure. Take seconds. Yeah, 33, sir. Okay. I think it's again a simple question, just use of 180 minus angle, right? So I'll Yes, not sir. go into that and let's go to the next one. Again, let's try and see if you can get this one. Hundred degrees. Yes, 100 is right. 100, sir. Just one more. You got 100, Kushi? G. Very good. Perfect. So these were simple use of formula. Uh, I think one more question that I'm giving you will use a theorem. So I'll give you the theorem first. This is a cyclic quadrilateral again. Question number 4. It's the cyclic quadrilateral which has the number of which has the sides. So here you will have to apply the property of a quadrilateral, and the property tells you that the diagonal cum product is equal to opposite side का product. मतलब कि let's call it pair of opposite side. Let's say let's call it A into B plus opposite side C into D. So see if you can use this property and solve. T root 10. 30 root 10. 3 root 10. Have you made a mistake somewhere? See. Okay, so, um,
length of one of the diagonal is 3 root 10, okay, and the other diagonal length is being asked. Three root 10 only, sir. Okay, okay. So nothing, Khushi? सर फॉर्मूला तो यूज कर लिया, देन उसके बाद सिंपलीफाई करना है। मुझे सिंपलीफाई करना नहीं आ रहा है अभी। हाउ वी सिंपलीफाई दिस 3 रूट Okay. 10? So just using ये तो this is easy. Just in the case of this, I think respectively लिखा है, which means I have to be careful here. So I'll take 5 root 2 into 5 root 2. Then into I'll take this one. Okay, so there is a into. I thought there is addition. Okay, okay, understood. So this is into. Understood. See if you can get the answer now. Yes, sir. Okay. I'm making a figure for you, and this is a trapezium. So this is a trapezium where one idea is known to about A1, which is 8, and I'll tell you that A2 is this, A3 is this, A4 is this. Now, if I tell you that, let's say A4 is 12, can you tell me what is the value of A3? Okay, I think you might have to know a formula here. So it's called some. So can you wait for 1 minute? Okay.
ओके सो अमान ये एक फॉर्मूला होता है, थ्योरम होता है बेसिकली, तो उतना दिमाग डोंट हैव टू सॉल्व इट. द सिंपल फॉर्मूला व्हिच सेज दैट the square of the area of this is applicable in this case only. The square of the area of, you see this, which one is 12? This one, right? So the square of area of this part will be equal to product of the area of this part and this part. It's called a TT. There's a name called Tolmy's theorem. So just special use case of trapezium. That's why, nothing else. Okay, it's uh, today I will end the class at around 8:10:30. So I hope that is fine. Yes. Yes, sir. Okay. Fine. Now figure below rectangle. Okay, I'll draw a figure for you. This is the question on a rectangle. In this case, let me draw a rectangle ABCD. Midpoint of the line, second point, and then second. What would be the length of this segment? Let's call it something. I think you will need more data points to solve this, right? Yes, sir. Yes, sir. We need more data points. Just what was the question? I forgot this. Let's call it. Okay. In the meantime, you can solve this question. It's on isosceles trapezium, and it's asking you the finding the area of the trapezium.
Okay, I think we'll first draw the figure here. So when we draw the trapezium, you have P, Q, R, S. This is 20. If you draw something like this part is also 20. Because of the nature of being isosceles, what I can conclude is that these two sides are same. Yes, So sir. there is a symmetry. So that's will be 16. Why? Because the sum has to be 52. This part is nice, clear. 16 wala part. No, sir, actually, 52 है and then we are left with 32. तो 32 को हम equally divide कर रहे हैं. Why? Yes. मतलब हमारे पास ये थोड़ी ना mention है. Let's say अगर S, I mean जो perpendicular है हमारा, let's say SD, अगर हम उसको नाम ये दे वर्ड सिमेट्री होता है ना एक वर्ड. हाँ. So do you think symmetry से I can see understand this question? This part, I mean 16 वाला part. सर इतना तो समझ आ गया कि PS and RQ इक्वल होगा बिकॉज ऑफ द आइसोलिसिस ट्रेपेजियम, बट P मतलब जो डिस्टेंस जो हम नीचे लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं 52 वाला, वो ये 16 कैसे आई ये नहीं समझ आ रहा. See, because what is PS is same as RQ, no? Yes. ठीक है. हाँ. So this angle is same. Let's call it theta. हाँ. ठीक है. Now compare the two triangles. दोनों का एंगल सेम है, दोनों का साइड सेम है, तो फिर हम सिमेट्री से ये बोल सकते हैं कि उनका दोनों का बेस भी सेम होगा. No, ऐसे as congruent है. हाँ. साइड एंड एंगल. हाँ. Okay. ठीक है. But मतलब 16 हो गया. Now you can think कि 16 मतलब ये तो formula हो गया SAS वगैरह. But now that you got, if after this, what else? There's one more thing in this question. हमें लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा. आई मीन डायगोनल्स का लेंथ. Okay. Let's draw a diagonal SQ. Okay. So is this diagonal going to be perpendicular? नो सर, वी हैव ऑलरेडी मेड ना कि डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर है टू द. तो ये 90 है. Yes. Is the angle S 90? Look at angle PS. It's confusing. I got lost. It's very confusing. No, you're almost there. So what is a diagonal? Is it SQ? Okay. Which one is this side? The lateral PS. So make it perpendicular. Okay. Fine. Okay. Now, in that triangle, I would suggest you first make this figure for because I'll erase this and make something else now. If you haven't, then just make this figure quickly. सर बना लिया फिगर को. Oh. So far, so good. Okay. Now the triangle that we drew was this. This is P, S, Q. Do you recall that in a triangle, if this is 90, then what happens? half Can I हो know? जाएगा hypotenuse. No. Okay. हाफ नहीं होगा. ये कुछ और फॉर्मूला है. ये परपेंड ये ऑल्टीट्यूड है यहाँ पे. Do you know something about this? If you recall. तो ये जो मैंने बनाया है ना, ये S है. ठीक है. ये फिगर पहले समझ में आ रहा है. ये जो फिगर हमने बनाया, ये जो था वो
Go back to the original figure. मैंने बस उसी को एक I took some portion and took it out here, nothing else. परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज ये h के बराबर होता है। Yes, yes. So let's call it t, जो ये वाला पॉइंट को t बोलते हैं, ठीक है। तो एस टी का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, एस टी का जो स्क्वायर होगा उसका एक फॉर्मूला होता है, इफ यू गो बैक टू राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी, दैट विल बी इक्वल टू टीपी इनटू टी क्यू। सो इफ दिस इज लेट्स से क्या है ये, लेट्स से पी एन क्यू, देन दिस इज टीपी इनटू टी क्यू। दिस कम्स फ्रॉम सिमिलैरिटी ओनली, and therefore now you can find out what is the height. So h, let's call, ये तो height ही है ना, इसको मैं h मान रहा हूँ। This is nothing but TP into TQ. If you go back to your figure, you will see that TP is 16 and TQ is not 16 but it is 36. That will give you h square is this much. तो इसका स्क्वायर रूट जब लोगे तो h आ जाएगा, तो 4 into 6 आ जाएगा h, 24. अगर बस यही इसमें, this is the main part of this question. 36 सर कहाँ पे है? Go back to the original figure. I'll make it here on the side so that you हाँ can relate. It was a trapezium isosceles in nature. मैंने यहाँ पे हाइट बनाया था, यहाँ पे हमने दो हाइट बनाया, तो दिस इज 16, ये 20 है, ये 16 है। इसको मैंने टी बोला, इसको मैंने क्यू बोला, और टी पी पी मत बोलो, पी क्यू आर एस। नाउ कैन यू कंपेयर? TQ सर नहीं समझ में हाँ आ रहा हाँ ओके मुझे। ओके समझिए। लुक एट द ट्राइंगल एस पी क्यू, खुशी, एस पी क्यू। हाँ What I have done is I have taken SPQ ST and made, square and then TP हाँ which is 16, okay समझ आ गया, ठीक है। हाँ, good. बट सर ये तो फॉर्मूला कब लिखा था हमने, मुझे नहीं याद आ रहा ये वाला। ये we did this in triangles. सर आई ऑलवेज गॉट कंफ्यूजन बिटवीन दोस फॉर्मूलाज, जहाँ पे मैं हमेशा शायद से हाइपोटेन्यूज का, हम वो वाला फॉर्मूला कब कंसीडर करते हैं वेयर हाइपोटेन्यूज का हाफ करके हमारे पास लेंथ आता है। एक बार एक काम करना, जब भी when you get when you are studying, when you are getting this time on this weekend, no, then वो right angle वाले जो formulas है ना, हाँ you use similarity there, ठीक है, then you will come across these results. ठीक है। Okay, fine. So we have got the height, but what is the area? What is the area? 864 Half into, yeah, half into, मतलब फिर formula है, nothing else. हाफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल Sum of साइड्स। parallel sides into altitude, I mean into height. करेक्ट, ओके। should I remove this? यस सर। Yes sir. ये क्वेश्चन का मैं फिगर बनाता हूँ। सो ये फिगर कुछ ऐसा दिखेगा, तो आउट ऑफ हेक्सागन लिख क्यों लिखा है इसमें? See, if you make a hexagon, there is some properties that you can recall. जैसे ये साइड अगर A है तो ये साइड क्या होगा, ट्वाइस ऑफ A, पता है ना? हेक्सागन पे Yes. क्वेश्चंस, हाँ मतलब ये साइड 2A होता है, वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। इफ यू जॉइन these sides, is this hexagon, what do you think, is it divided into 6? Equilateral triangle. Yes. yes yes so ये भी A हो गया, ये भी A हो गया, तो ये वाला पार्ट 2A हो गया। एंड इफ यू जॉइन किसी भी ट्राइंगल में ना, अगर मान लो कि ऐसा कोई एंगल है, जैसे ये 120 है, ये 30 है, ये 30 है, तो साइड्स का रेशियो क्या होता है?
साइन के जो रेशियो 1:3. 1/√3. Yeah. Okay. So let's say ऐसा कुछ बना लो, ये ए है, ये ए है, तो ये क्या होगा जो भी मैंने बनाया? इसका मैं नाम देता हूँ ए सी. A√3. ए सी विल बी A√3. यस. खुशी, इज इट मेकिंग सेंस? No, sir, it's very fast for me. I am not able to understand. But before this it was fine, no? 6 हाँ equal हाँ, parts. वहां तक समझ आ गया कि 120 and then we 30 and then उसके बाद how we get the sides 1:1:√3. Yeah, so Hmm. ये जो हेक्सागन है ना, Hmm. take this part. Hmm. What is Hmm. this length? Hmm. Tell me in terms of A. If अगर हम triangles को consider कर रहे हैं, let's say A equal होगी तो 2A. नहीं, 2A तो ये सर होता है ना, ये कैसे पता ऑपोजिट. लगेगी, अभी तो वैल्यूज ही नहीं है मेरे पास. ये हाउ आई एंगल कितना है? कैलकुलेट? What is the angle? Let's call it A. What is angle A? सर अगर ये 1 2 3 4 5 6 6 साइड है, राइट? हम्म. तो हर एक का इंटीरियर एंगल विल बी 720 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 120. हम्म. हम्म. और ये एंगल सेम होगा. हाँ, क्योंकि साइड्स इक्वल है 30 30 ईच. यस. हम्म. अब ये देखो. हम्म. अब हम्म. बताओ. तो वो वाला साइड हमारा, बट वो तो सब समझ आ गया, बट मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि 1:1:√3 कैसे, √3 कैसे आया, मतलब ये हम कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हैं, आई मीन साइन का क्या यूज कर रहे हैं? तो एक्चुअली वो कैसे आता है, ये तो कैट के लिए, मतलब हम्म. सेफ टाइम के लिए. हम्म. You make a midpoint, say, मतलब base में midpoint, you make an altitude in that triangle. Then हम्म. from Pythagoras theorem, you can get the √3A base. ठीक है, तो उससे वो derive हो जाता है. But अब I'm just telling you to remember, whenever you have these angles, then the sides are in this ratio. That's what I'm one telling is you. to 1:3 root Yes, 3. yes, yes. Okay. Okay. Now in hexagon, uh, √3, when you get to one triangle area, you can also figure out the entire hexagon area because it is 6 times. हम्म. Now, if I draw a figure like this, I'm drawing a figure. हम्म. What fraction of the area of outer regular parallelogram? Just join the midpoints of, instead of hexagon, make it octagon. Okay. Okay. And join the midpoints of all the sides and answer the question then. सर इसमें भी गॉट द मतलब आई गॉट एंगल्स एज 135. इंटीरियर एंगल सब 135 होंगे, एंड देन इफ वी कंसीडर सारी मतलब साइड्स इक्वल होती हैं, तो मतलब हमारे पास वो वाला एंगल बन जाएगा, मतलब एक का एंगल 135 और बाकी दो का 45. Hmm. तो फिर वही वाला First, रिलेशन वी गोना फॉलो, 1:1:√3 वाला.
दोनों जो इनर, एक इनर बनेगा, एक आउटर बनेगा. See if you can make a figure and then I'll tell you how the figure is. सर इसमें साइन 37.5 की वैल्यू चाहिए होगी. हाँ. Okay. And sine 45 will be 1 by root 2. एक्चुअली सर वो आउटर एंगल जो है, मतलब इनर एंगल 135 डिग्री आ रहा है, तो Hmm. बाकी 45 डिग्री जो है वो 22.5 में डिवाइडेड होंगे. For Hmm. that we'll have to need that thing. Hmm. 22.5 you can figure out actually. No, but usually, okay. अगर हम मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो क्या फिर से एक पॉलीगन बनेगा? हाँ यस सर. Hmm. बनेगा, ओके ओके. और उन जो नया पॉलीगन बनेगा उसका रेशियो क्या होगा ऑपोजिट प्रीवियस वाले के रेशियो के कंपैरिजन में? सर साइड का रेशियो ना, हाँ. cos 22.5. ओके ओके. ठीक है. वो एक बार वो बाद में ट्राई इट आफ्टर द क्लास. आई हैव मोर, आई थिंक अराउंड 8 क्वेश्चंस लेफ्ट. तो आई जस्ट एंड विद दिस क्वेश्चन, ठीक है, फॉर नाउ, बिकॉज ओके. दिस इज सर ये लाइक मुझे ईजी नहीं टू. समझ आया अभी ऑक्टागन वाला कि हमारे पास So that, कॉस आंसर कैसे आएगा. हाँ, उसका सॉल्यूशन बहुत लंबा है, सो आई एम नॉट Okay. डूइंग दैट नाउ. इसका सॉल्यूशन हम्म. इज हियर. आई हम्म. वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस आइडिया आल्सो, सो आई हम्म. विल स्किप दैट फॉर नाउ. ठीक है. एंड सर आई आई विल गेस ये सारे क्वेश्चन प्रोजेक्शन से बेटर नहीं हो जाएंगे, बिकॉज इफ वी सी इट इन एज एज अ ट्रायंगल तो उससे प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर डू. दैट वुड बी अ इजियर थिंग. आई डोंट अंडरस्टैंड. या कुड बी. यस. Okay, one last, this is on rectangle. I think this was the question. I'll make a diagram first. So this is a rectangle. A, let's call it something ABCD. और जो ये मिड पॉइंट था उसका मतलब था कि let's say this is 8, this is if this is 6, this is 2. Okay, and it's a simple question. Okay, it's not a lengthy one. It's a very simple one. If this is 6, this is 2, and this is 22. This is known to you. Just don't look at this, just look at the diagram so that I can, it's a simple one. So I've given you a rectangle where the sides are ABCD. The lengths are known to you. Let's, AD is 22 and this part is 6, this part is 2. Now, can you tell me that what is the length of this part, AF?
there a change in question? नहीं, I've just changed the ये क्या बोलते हैं vertices because this is the same question only. Question. Because the vertices now will make sense. The question is originally to find out the midpoints of the line segments AB and BC, for which this is the first step to find out AC. Okay. Okay, can you, if I make it a little easy, let's say this is 6, then can you find out what is the midpoint length of the line segment joining midpoints of AB and BC? Yes, sir. Okay, so what will that be? Sir, is it 10? No, no, read the question, read the question. Uh, 5. 5 is right. So, matlab it's not so, it's quite easy, like, especially when I give you this 6. So actually, Uh, without that, also is calculating. Like 22 and 8 is given, so it will be 22 square plus 8 square, the diagonal. hmm, After that, if we take CF as x, hmm. then we can find out AC as root 584 minus x square. X was coming 0, I don't know, you made some calculation, I guess. Okay, okay. ठीक है, मतलब
ये क्वेश्चन मैंने बस वो दिया था कि you can have questions where this is a quadrilateral and then a concept of triangle can come in. So this is the concept of triangle, that if you have a line joining midpoint, Hmm. then that is what? That is half of the base, Hmm. midpoint theorem. ठीक है? Which means that अगर हमें AC पता चल जाए, which is 10 of course from Pythagoras theorem, then I can figure out what is the length of the line joining midpoints, which will be nothing but half of 10. That is 5. बट सर हमारे पास ये CD6 तो आपने दे दिया, बट इन यूजुअली हम कैसे लेके आएंगे CD? नहीं, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, उसमें ये 8 नहीं था, तो मैंने उसको चेंज किया था, मैंने यहाँ पे 8 दिया और ये 6 मैंने इनविजिबल रखा, पर वो बहुत हार्ड बन जाएगा, डिफिकल्ट बन जाएगा, उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो ओके, इट्स बेटर दैट CD हमें 6 दिया हुआ था एंड 8 नहीं दिया हुआ था. correct. If, so my main purpose is that you in a quadrilateral, don't forget that you can have a mix of triangles. So this is a triangle. You also saw the previous question. So you can have a triangle, right angle triangle or whatever within a quadrilateral. Hmm. So if you remember, एक rectangle में I can make something like this, right? I can make multiple triangles within a rectangle also. And there are more questions that I will build upon this. Today I just covered all the maybe concepts part. तो ठीक है, इतना काफी है अभी के लिए, but I had like more questions. So fine. I think we can close this for now. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Yeah. All right then. Thank you guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Good night. Bye. Good night.